Students. We'll start bhajans. Okay. Slide there. Just follow the slides. कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो लिंक अनुपणम् गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Echad, Hashem Bahu, Vahishtem Asti, Ushta Asti, Ushta of mine, Yetashai, Vahishai Hashem, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato.
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात् शान्ति शान्ति शान्तिः सुन्दर सुन्दर विनायका सुन्दर सुन्दर विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका कोटिमन विमल गजानन कोटिमन विमल गजानन सकल विघ्नहर साई गजानन सकल विघ्नहर साई गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन सुन्दर सुन्दर विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका विघ्नकोटिहर विमल गजानन सकल विघ्नहर साई गजानन सकल विघ्नहर साई गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन
गजानन ईश्वरी नंदन पर्वि गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 विनायका That's not even 50% of the people saying Om. Huh? Everyone, please close your eyes, invoke Om. Ganapati is Om. Ganapati is Pranavaswarupa. So if you don't say Om, you have not invoked the presence of Ganapati. You understand? Omkaram is Ganapati. He is called Pranavaswarupa. And if you look at his trunk, it is turned inside. And if you look at his head, it will actually appear like Omkaram. So if you don't say Om, you have not invoked Ganesha. 1, 2, 3, let's go. They practice bhajans, uncle. कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवतीं धीनामविद्यावतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॐ श्री हयग्रीवाय नमः शरदिन्दविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामां अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दारुणसुन्दरीमुपास्महे ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः अन्तरायतिविरोपशान्तये शान्तभावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः गुणवे सर्वलोकानां विशेषे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीमेधा दक्षिणामूर्तये नमः अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः हरिः ॐ
यशो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलाय सर्वस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां गुणस्तेषां पराभवः येषां देवस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री सजीवनंदनाभ्यां नमः। ओम श्री अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री साई रामाय नमः। ओम सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव पत्नीपते तेऽङ्घ्रियुग्मं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतध्रुवाणि तन्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे आर्ताविषण्णाः शिराश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्तनारायण सप्तमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सत्यनारायणायेति समर्पयामि साई नारायणायेति समर्पयामि हरि ओम। आचम्या ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः रुद्राय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः मधोक्षयाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमिभारका एतेषामपि विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों 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 श्री गोविंद 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 गोविंदम्। Okay, you have to repeat after me. Take a few akshatas. And who is the head of the family can do this. Put a few akshatas on your left hand, and that left hand should be on your right thigh, and close this with this hand like this, and then put the whole hands on your right thigh. Okay. Om Vishnu 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 Sri Govinda 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 Govindam Mama Upata. Please say. मम समस्ता कृतक्षय द्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यः ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे
श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः पश्चिमदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे सागरो मध्यप्रदेशे समस्त ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ वर्तमानस्य श्री शोभकृत नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे तृतीयायां भानुवासरे प्रदोषकाले श्रीमान प्लीज टेल योर गोत्रम विद इन योरसेल्फ गोत्रोद्भवस्य अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम धैर्य विजय आयुः आरोग्य अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभि वृद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोप शान्त्यर्थं समस्त मंगला अवाप्यर्थं वरसिद्धि विनायक देवतामुद्दिश्य वरसिद्धि विनायक प्रीत्यर्थं कल्पोक्त प्रकारेण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पुण्यकाले यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये तदङ्गत्वेन श्री महागणपति मूलमन्त्र न्यास ध्यान जप आवरण पूजयांच करिष्ये. Take a bit, you can leave rakshatas into the plate you have. If not, you can also just put a spoon of water, so that is going to happen. Now we are going to do the Ganapati Moola Mantra Japam 108 times, because many people here already have the Moola Mantra Diksha. So we are going to do the Nyasa, invoking the Ganapati Maha Mantra, and after that, this is the what is called Ganapati Yantra. It's called, no, this is the Ganapati Yantra. I won't go into description of it. This is the Mahaganapati Avaranam, and this puja we will do. Following that, we will do the Shodashopachara puja to Bhagavan. Jai Sri Sai Ram. Om अस्य श्री महागणपति महामन्त्रस्य गणकऋषिः गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता गां बीजं ह्रीं शक्तिः गूं कीलकं श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जस्मै विनियोगः. ओं गां अंगुष्ठाभ्यां नमः. ओं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः. ओं गूं मध्यमाभ्यां नमः. ओं गैं अनामिकाभ्यां नमः. ओं गौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ओं गां करतलकर्षाभ्यां नमः. ओं गां हृदयाय नमः. ओं गीं शिरसे स्वाहा. ओं गौं शिखायै वषट्. ओं गैं कवचाय हुम्. ओं गौं नेत्रत्रयाय वौषट्. ओं गः अस्त्राय फट्. भूर्भुवस्वरो विनिर्विघ्नः. ध्यान
वीर्यम् बीजापूरगलेक्षु कार्मुकर्जा चक्राब्जपाशोत्पला व्रीह्यग्रस्वविशालरत्नकलशैप्रोद्यत्कराम्भोरुहः ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्रीशोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविभक्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः ॐ लं निमित्तत्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः गन्धं परिकल्पयामि ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः पुष्पं परिकल्पयामि ॐ वायुतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपं परिकल्पयामि ॐ तेजोतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः दीपं परिकल्पयामि ॐ अमृततत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि ॐ सर्वतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि लमित्यादि पञ्चोपचारान् समर्पयामि यथाशक्ति मूलम् अष्टोत्तरशतवारं जपेत् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं
श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद
वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा मूलेन अष्टोत्तरशतवारं बिन्दौ ओम all of you should say Sreem Hreem Kleem Om Sreem ह्रीं क्लीं Om Gam Hriday Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Deem Saras Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gom Shikha Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaim Kavacha Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaum Netra Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaha Astra Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Sreem Hreem Kleem Sri Gurave Sri Satya Sai Nath Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Sri Paramagurave Sri Shri Sai Nath Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Sri Parameshti Gurave Sri Dattatreya Swami Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Sri Sripati Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Girija Girijapati Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Ratratipati Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Mahimahipati Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Rudhyamoda Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Samurtha Pramoda Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Kanti Sumukha Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Padmanabati Durmukha Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Drava Vighna Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Dravida Vighna Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Dhara Shankaradhi Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Sri Padmanidhi Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gam Hriday Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Deem Saras Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gom Shikha Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaim Kavacha Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaum Netra Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Gaha Astra Shakti Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Am Brahmi Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Im Maheshwari Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Kaumari Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Room Vaishnavi Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Room Varahi Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Aim Mahendri Sri Padakam Pujayami Om Aim Mahendri Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Aum Chamunda Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Aha Mahalakshmi Sri Padak Matru Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Lam Indra Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Ram Agni Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Tam Yama Sri Padakam Pujayami Namaha ओम श्रीं ह्रीं क्लीं Om Ksham
हां निवृत्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ वां वरुण श्री पादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ यां वायु श्री पादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ सां सोम श्री पादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ हां ईशान श्री पादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ॐ गां हृदयाय नमः। ॐ गीं शिरसे स्वाहा। ॐ गौं शिखायै वषट्। ॐ गैं कवचाय हुम्। ॐ गौं नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ गः हस्ताय पट्। भूर्भुवस्वरोमिति दिग्विमोघः। ध्यानम् बीजापूरकरेक्षुकार्मुकजा चक्राब्जपाशोत्पला प्रीह्यग्रस्वविशालकलशैक्रोद्यत्कराम्भोरुगः। येयो वल्लभया समत्तकया सृष्टोज्ज्वलद्भूषयः। विश्वोत्पत्तिनिवर्तिनिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थः। ॐ लं पृथिव्यात्मने गन्धं श्रीमहागणाधिपतये नमः। गन्धं परिकल्पयामि। ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः। पुष्पं परिकल्पयामि। ॐ यं वायुतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः। धूपं परिकल्पयामि। ॐ नं तेजोतत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः। दीपं परिकल्पयामि। ॐ हं अमृततत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः। अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। ॐ सं सर्वसत्त्वात्मकायै श्रीमहागणाधिपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। लं इत्यादि पञ्चोपचारान् समर्पयामि। अथ विनायकपूजा प्रारम्भः। भवसञ्चितपापूगविध्वंसन विचक्षणं विघ्नान्धकारभास्वन्तं विघ्नराजमहं भजे। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। उत्तमं गणनाथस्य व्रतं सम्पत्करं शुभं भक्ताभीष्टप्रदं तस्मात् ध्यायेत् तं विघ्नविनायकम्। I think you should all say this. उत्तमं गणनाथस्य व्रतं सम्पत्करं शुभं भक्ताभीष्टप्रदं तस्मात् ध्यायेत् तं विघ्ननायकं ध्यायेत्। This is meditation, so all of you should do namaskaram and pray to Ganesha to be present in the Murti in front of you, invoking. Now what we are going to do is the invocation, Dhyanam. Dhyanam, Dhyayet Gajananam, Devam, Taptakanchana Sannibham, Chaturbhujam Mahakayam, Sarvabharana Bhushitam, Om Sri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Take some akshantas and put offer to the Murti. Om Sri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Dhyayami, Dhyanam Samarpayami. Avahanam Atragacha Jagadvandya Surarajarchiteshwara Anathanatha Sarvagnya Gauri Garbhasam Samudbhava. Om Sri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Om Sri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Avahayami. Avahayami. We are asking Bhagavan to fill the Murti in front of
you with his divine light. Now you are going to take a few akshatas and offer as the seat for him. Mauktikaiः pushparagaischa nana ratnair virajitam ratna simhasanam charu pretyardham pratikruhyatam. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Asanam samarpayami. Asanam samarpayami. So if you have a spoon and a uttarina, just take a spoon and you are going to offer it to wash his hands. Gauri putra namastestu shankara priyanandana gruhanadhyam maya dattam gandha pushpakshatay yutam. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Adhyam samarpayami. Adhyam samarpayami. Take a spoon of water and you are offering it to his feet, and remembering that you are now washing his feet. Gajavaktra namastestu sarvabhishta pradayaka bhaktya padyam maya dattam gruhana dviradanana. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Padayoh Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Padayoh padyam padyam samarpayami. You should also repeat the last line with me. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Om Atha. Now we are going to take a spoon of water again, offer it to his mouth, to his face, and you are giving him water to drink. Om Anathana Sarvagya Girvana Varapujita Ruhana Chamanandeva Tubhyam Dattam Maya Prabho. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Mukhe Achamaniyam Samarpayami. I want everybody to repeat, not the front line only. Oh, Mukhe Achamaniyam Samarpayami. Mukhe Achamaniyam Samarpayami. Om Dadhikshe Samayuktam Madhvajyena Samanvitam Madhupakkam Gruhanedam Gajavaktra Namostude. Take a flower if you have, dip it in the water and offer it to put the flower at his feet. Om Dadhikshe Samayuktam Madhvajyena Samanvitam Madhupakkam Gruhanedam Gajavakram Madhupakkam Gruhanedam Gajavaktra Namostude. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Madhupakkam Samarpayami. Madhupakkam Samarpayami. Om Atha Shuddhodaka Snanam. If you have a flower, take a flower and just sprinkle on the murti for doing the snanam for him. Okay. Om Ganga Sarvatirthebhyah Ahutairamalaiర్జలైః Snanam Kurushya Bhagavan Uma Putra Namostute. Om Bhadram Karne Shriyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatraः Sthirairangai Sushtuvagam Sastanubhih Nishema Devahitam Yadayuh Swasti Indra Vruddhashravah Swasti Pusha Vishwavedah Swasti Nastaksho Arishtanemih Swasti No Brihaspati Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Lam Namaste Ganapate Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Ritham Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanam Avashishyam Avapashchatat Avapurastat Avotaratat Avadakshinatat Avachodvatat Avadhratat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Vangmayastvam Chinmayah Tvam Anandamayastvam Brahmamayah
त्वं सच्चिदानन्दातिलीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापाग्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्रादीयानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकामो धर्मशीर्षमशिष्याय देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्धनाद्यं यं काममधीते तं कमलेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्ध्या मनश्चञ्चपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो धूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ सिद्धमन्त्रो भवति महाविज्ञात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गं गणपतये नमः ॐ ग्लौं गणेशाय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयतेन कुशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यचक्षाय जन्मद आवो जनयता जना ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नान
स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि. Now take some akshatas, offer as if you are offering clothes to Bhagavan. Om Raktavastradvayam Charudev Yogyam Cha Mangalam Shubhapradagrhanatvam Lambodaraharatmaja. Om Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Vastrayugmam Samarpayami. Vastrayugmam Samarpayami. That is what you want to say. Yajnopavitam. Om Yajnopavitam is offering a flower or offering some akshatas to Bhagavan. Rajatam Brahmasotram cha kanchanam chottariyakam Gruhanadeva sarvajña bhaktanamistadayaka. Om Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Yajnopavitartham Yajnopavitartham Akshatan Samarpayami. Akshatan Samarpayami. Now you can also offer a flower now. Chandanagaru, this is we are going to offer Gandham, but since you don't have Gandham in your place, you can offer flower. Chandanagaru Karpura Kasturi Kunkumanvitam Vilepanam Surasreshta Prityartham Pratigruhyatam. Om Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Srigandham Dharayami. Gandhasyopari alankaranardham kumkumam samarpayami. Now take a few akshatas and offer akshatas to Bhagavan next. Akshatan dhamadan divyan shaliyan standulan shubhan gruhana paramananda shambhuputra namostute. Om Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. That is 4 people out of 100 people here. That said Siddhivinayaka Swami. Okay, Siddhivinayaka Swami Chiranjeevi Chapra Babu. Okay. Om Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. Alankaranadam Akshatan Samarpayami. Now take a flower and offer to Bhagavan. And Sugandhani cha pushpani jati kundamukhani cha. Now we are going to do puja with 21 flowers here that devotees are going to be offering to Bhagavan here. But however, make sure that when you are doing all the puja is done, offer the so that you are offering all the 21 flowers in one flower. Okay. Now, because all flowers are one, God is one in all, so that is the. But why is Bhagavan worshipped with flowers? Bhagavan Ganesha is nothing but the entire Mother Nature embodied. Therefore, we offer him flowers, we offer him different types of leaves, we offer him different types of fruit, and what he loves is the grass blades, and that also is offered. So with all those offerings, we are worshipping the Mother Nature. Entire Mother Nature is worshipped. Even his murti is made of clay, which will be then dissolved in water. So that is the significance of Siddhivinayaka Swami Vratam. Now Sugandhani cha pushpani jati kundamukhani cha ekavimshati patrani samgruhana namostute. Om Siddhivinayaka Swamine Namaha. Atha anga puja. Om Parvati Nandanaaya Namaha. Padau pujayami. Om Parvati Nandanaaya Namaha. Padau pujayami. So we are going to do anga puja. Now what we are doing is worshipping him from the feet, from the toe to the tip of his head. And as we do that, we are invoking the Murti, worshipping the entire Murti of Bhagavan. Om Parvati Nandanaya Namaha, Padau Pujayami. Om, we can say Om Gam and I'll say Ganesha. Om Gam Parvati Nandanaya Namaha, Padau Pujayami. Om Gam Ganeshaya Namaha, Gulbhau Pujayami. Om Gam Jagadhatre Namaha, Janghe Pujayami. Om Gam Jagat Vallabhaya Namaha, Januni Pujayami. Om Gam Uma Putraya Namaha,
ऊरू पूजयामि ॐ गं विकटाय नमः कटिं पूजयामि ॐ गं गुहाग्रजाय नमः गुह्यं पूजयामि ॐ गं महोत्तमाय नमः मेघ्रं पूजयामि ॐ गं उत्तमाय नमः उदरं पूजयामि ॐ गं विनायकाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ॐ गं पाशच्छिदे नमः पार्श्वे पूजयामि ॐ गं हेरम्बाय नमः हृदयं पूजयामि ॐ गं कपिलाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ गं ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः स्कन्धौ पूजयामि ॐ गं हरसुताय नमः हस्तौ पूजयामि ॐ गं ब्रह्मचारिणे नमः बाहून् पूजयामि ॐ गं सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि ॐ गं एकदन्ताय नमः दन्तौ पूजयामि ॐ गं ॐ शूर्पकर्णाय एकदन्ताय नमः दन्तौ पूजयामि ॐ गं विघ्ननेत्रे नमः नेत्रे पूजयामि ॐ गं शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि ॐ गं फालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि ॐ गं ॐ नागाभरणाय नमः नासिकां पूजयामि ॐ गं चिरन्तनाय नमः चुबुकं पूजयामि ॐ गं स्थूलोष्ठाय नमः ओष्ठौ पूजयामि ॐ गं गणन्मदाय नमः गण्डे पूजयामि ॐ गं कपिलाय नमः कचान् पूजयामि ॐ गं शिवप्रियाय नमः शिरः पूजयामि ॐ गं सर्वमङ्गलासुताय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ॐ गणपतये नमः. Okay, 21 different types of leaves. Now all these leaves represent various medicinal leaves. And the Arkapushpaja. See, this is incredible. Swami is adored with a Arkapushpam garland. Arkapushpam means this is called in Telugu. Milkweed. Calotropis. Calotropis gigantica is its botanical name. So that's called Calotropis gigantica. It's a very special flower that is only available in India. It's a tropical plant. What is the importance of this? It attracts all the energy from the sunlight. And that's what it's offering the entire light. He's adored with all the light of the universe. That is the significance of it. Now, 21 different, all in this is Datura. This is Datura flower. Okay, and also leaves. Datura is a medicinal plant. It is used for very special purposes. Like that, there is Arjuna Patram, which is actually important for cholesterol lowering. When we were young children, my father will take and we'll collect all these different leaves so that and he will explain what these are. Now what we go to Safeway, so there is no trees or flowers, but we think whatever we are offering today is all those leaves and all those flowers. Om Gam Umaputraya Namaha Machi Patram Samarpayami. Om Gam Herambaya Namaha Brihati Patram Samarpayami. Om Gam Lambodharaya Namaha Bilva Patram Samarpayami. Om Gam Dviradananaya Namaha Durva Patram Samarpayami. Om Gam Dhoomaketave Namaha Dhoomaketave Namaha Dattura Patram Samarpayami. Om Gam Om Brihate Namaha Badari Patram Samarpayami. Om Gam Apavarga Pradaya Namaha Apamarga Patram Samarpayami. Om Gam Tvaimaturaya Namaha Tulasi Patram Samarpayami. Om Gam Chirantanaya Namaha Chuta Patram Samarpayami. Om Gam Chuta Patram is mango leaves.
चूतपत्रं समर्पयामि ॐ कपिलाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि ॐ विष्णुस्फुटाय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं समर्पयामि ॐ एकदन्ताय नमः दाडिमी this is pomegranate yeah this is दाडिमी is pomegranate एकदन्ताय नमः दाडिमी पत्रं समर्पयामि ॐ अमलाय नमः आमलकी पत्रं समर्पयामि ॐ देवदारू which is pine needles is what is also offered ॐ महते नमः मरुवक पत्रं समर्पयामि ॐ this is मरुवकं मरुवक पत्रं समर्पयामि ॐ गं सिन्धूराय नमः सिन्धूरपत्रं समर्पयामि ॐ गजाननाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि ॐ गण्डगणन्मदाय नमः गण्डवीपत्रं समर्पयामि ॐ शङ्करप्रियाय नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ भृङ्गराजकटाय नमः अश्वत्थपत्रं समर्पयामि ॐ अश्वत्थपत्रम् is pupil leaves ॐ अर्जुनदन्ताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि ॐ अर्कप्रभाय नमः that is arka is jilled which is as I mentioned अर्कप्रभाय नमः अर्कप्रभाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि ॐ गणपतये नमः ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः एकविंशति पत्राणि मनसा समर्पयामि now we are going to offer with 21 different types of flowers and I will try to explain what those are as we go along. Om Panchasya Ganapom Gam Panchasya Ganapataye Namaha Unnara Pushpam Samarpayami Om Gam Mahaganapataye Namaha Mandara Pushpam Samarpayami Om Gam Dhira Ganapataye Namaha Dadini Pushpam Samarpayami Om Gam Om Vishwaksena Ganapataye Namaha Vakula Pushpam Samarpayami Om Gam Amoda Ganapataye Namaha Amrunala Pushpam Samarpayami Om Gam is lotus Amrunala Pushpam Samarpayami Om Gam Ganapataye Namaha Om Aboda Ganapataye Namaha Amrunala Pushpam Samarpayami Om Gamatha Ganapataye Namaha Patali Pushpam Samarpayami Om Vidya Ganapat Rudra Ganapataye Namaha Drona Pushpam Samarpayami Om Vidya Ganapataye Namaha Dattura Pushpam Samarpayami Om Vighna Ganapataye Namaha Champaka Pushpam Samarpayami Om Durita Ganapataye Namaha Rasala Pushpam Samarpayami Om Everybody sing Om Gam? No, I don't think so. Because volume will be much better. Om Vighna Ganapataye Namaha Champaka Pushpam Samarpayami Om Gam Durita Ganapataye Namaha Rasala Pushpam Samarpayami Om Gam Kamitardha Prada Ganapataye Namaha Ketaki Pushpam Samarpayami Om Gam Sammoha Ganapataye Namaha Madhavi Pushpam Samarpayami Om Gam Vishnu Ganapataye Namaha Shamyaka Pushpam Samarpayami Om Gam Arka Ganapataye Namaha Arka Pushpamalam Samarpayami Om Gam Gajasya Ganapataye Namaha Kalhara Pushpam Samarpayami Om Gam Sarva Siddhi Ganapataye Namaha Sevantika Pushpam Samarpayami Om Gam Veera Ganapataye Namaha Bilva Pushpam Samarpayami Om Gam Kandarpa Ganapataye Namaha Karavira Pushpam Samarpayami Om Gam
गम उच्चिष्ठ गणपतये नमः कुन्दपुष्पं समर्पयामि ओम गम ब्रह्म गणपतये नमः पारिजात पुष्पं समर्पयामि ओम गम ज्ञान गणपतये नमः जाति पुष्पं समर्पयामि ओम गम गणपतये नमः ओम सिद्धिविनायक स्वामिने नमः एकविंशति पुष्पाणि मनसा समर्पयामि. Now I don't know if you have a couple of blades of grass. Huh? Yeah. Okay. So imagine that you're offering to Bhagwan this garika. Garika means 2 blades of grass to him. ओम अथ एकविंशति दुर्वायुग्म पूजा. ओम गम गणाधिपाय नमः. ओम गम गणाधिधराय नमः. ओम गम अखुवाहनाय नमः. ओम गम विनायकाय नमः. ओम गम ईशपुत्राय नमः. ओम गम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः. ओम गम एकदन्ताय नमः. ओम गम इभवक्त्राय नमः. ओम गम मूषकवाहनाय नमः. ओम गम कपिलवर्णाय नमः. ओम गम ब्रह्मचारिणे नमः. ओम गम मोदकहस्ताय नमः. ओम गम सुरश्रेष्ठाय नमः. ओम गम गजनासिकाय नमः. ओम गम गजमुखाय नमः. ओम गम सुप्रसन्नाय नमः. ओम गम कमलाग्रजाय नमः. ओम गम महापुत्राय नमः. ओम गम स्कन्दप्रियाय नमः. ओम गम गणपतये नमः ओम श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविधपत्र पुष्पाणि समर्पयामि. अथ अष्टोत्तरशतनाम पूजाः. ओम अष्टोत्तरशतनाम पूजा. So you can take a flower, and once we are done with it, you can offer, and I will be offering the flowers on all your behalf. Om Gam Vinayakaya Namaha. ओम गम विनायकाय नमः Om Gam Vighnarajaya Namaha. ओम गम विघ्नराज ओम गम Gauri Putraya Namaha. Om Gam Ganeshwaraya Namaha. Om Gam Skandakridaya Namaha. Om Gam Avyayaya Namaha. ओम गम भूताय नमः. ओम गम दक्षाय नमः. ओम गम अध्यक्षाय नमः. ओम गम विजप्रियाय नमः. ओम गम अग्निगर्वच्छिदे नमः. ओम गम इंद्रश्रीप्रदाय नमः. ओम गम वाणीप्रदायकाय नमः. ओम गम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः. ओम गम सर्वतनयाय नमः. ओम गम सर्वरीप्रियाय नमः. ओम गम सर्वात्मकाय नमः. ओम गम सृष्टिकर्त्रे नमः. ओम गम देवानीकार्चिताय नमः. ओम गम शिवाय नमः. ओम गम सर्वबुद्धिप्रदाय नमः. ओम गम शांताय नमः. ओम गम ब्रह्मचारिणे नमः. ओम गम गजाननाय नमः. ओम गम हेमातुराय नमः. ओम गम स्तुत्याय नमः. ओम गम भक्त विघ्न विनाशकाय नमः. ओम गम एकदन्ताय नमः. ओम गम चतुर्बाहवे नमः. ओम गम चतुराय नमः. ओम गम शक्ति संयुताय नमः. ओम गम लंबोदराय नमः. ओम गम मूर्पकर्णये नमः. ओम गम हरये नमः. ओम गम विदुत्तमाय नमः. ओम गम काव्याय नमः. ओम गम ग्रहपतये नमः. ओम गम कामिने नमः. ओम गम सूर्याग्निलोचनाय नमः. ओम गम आशांकुशधराय नमः. ओम गम खण्डाय नमः. ओम गम गणातीताय नमः. ओम गम निरञ्जनाय नमः. ओम गम कल्मषाय नमः. ओम गम सिद्धाय नमः. ओम गम सिद्धाच्युतपदाम्बुजाय नमः. ओम गम बीजापूरबलासक्ताय नमः. ओम गम वरदाय नमः. ओम गम अश्वताय नमः. ओम गम दिने नमः. ओम गम प्रियाय नमः. ओम गम भयाय नमः. ओम गम दिने नमः. ओम गम कृणे नमः. ओम गम शापधृते नमः. ओम गम श्रीदाय नमः. ओम गम जयाय नमः. ओम गम कमलकराय नमः. ओम गम श्रीपतिस्तुतिहर्षिताय नमः. ओम गम रात्रिभेत्ते नमः. ओम गम जयलीलाय नमः. ओम गम चन्द्रचूडाय नमः. ओम गम हरेश्वराय नमः. ओम गम यज्ञोपवीतवते नमः. ओम गम कलिकल्मषनाशनाय नमः. ओम गम स्थूलकण्ठाय नमः. ओम गम स्वयंकृत्रे नमः. ओम गम सामघोषप्रियाय नमः. ओम गम हराय नमः. ओम गम स्थूलतुण्डाय नमः. ओम गम अग्रगण्याय नमः. ओम गम धीराय नमः. ओम गम वागीशाय नमः. ओम गम सिद्धिदायकाय नमः. ओम गम पूर्वा बिल्वप्रियाय नमः. ओम गम शान्ताय नमः. ओम गम पापहारिणे नमः. ओम गम समाहिताय नमः. ओम गम आश्रितश्रीकराय नमः. ओम गम सौम्याय नमः. ओम गम वाञ्छितदायकाय नमः. ओम गम शान्ताय नमः. ओम गम अच्युतार्चाय नमः. ओम गम कैवल्याय नमः. ओम गम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः. ओम गम ज्ञानिने नमः. ओम गम दयायुताय नमः. ओम गम शान्ताय नमः. ओम गम ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः. ओम गम अनन्तदैत्याभयप्रदाय नमः. ओम गम यज्ञमूर्तये नमः. ओम
गौर्तिमतये नमः शैलेन्द्र दनुजोत्संग खेलनोत्सुक मानसाय नमः स्मलावन्य सुधासार जित मन्मथ विग्रहाय नमः सहस्र जगदाधाराय नमः मायिने नमः मूषिकवाहनाय नमः परमार्चिताय नमः विद्धये नमः श्रीकण्ठाय नमः विघ्नेश्वराय नमः चिन्तामणिद्वीपपतये नमः परमात्मने नमः गजाननाय नमः हरिष्ठाय नमः प्रसन्नात्मने नमः तुष्टाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः स्तोत्रसहस्रनाम पूजां समर्पयामि ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धिं सुमनोहरम् उमासुतं नमस्तुभ्यं गृहाण वरदो भव ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ अथ दीपं वाज्यन्तिवत्यसंयुक्तं बन्धिना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपम् ईशपुत्र नमोऽस्तु ते ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः ज्ञानप्रकाशार्थं दीपं संदर्शयामि ॐ अथ नैवेद्यम् I believe you have some fruits with you, so offer the fruits to Bhagavan in the front here. Anybody, if you don't have fruit, ask one of us, we'll give you the fruit with careful, very well. Om Sugandhancha Sukrutamschaiva Modakan Ghृतपाचितान्. Oh, they have made lot of food for him. He's very happy today. You can see laddu, modakas, all those things. I can't continue the puja anymore. It's very tempting. So, all of you should remember why we worship Ganesha or Ganesha with so much of love, and he is the most favorite god. Especially, he loves children, and he is the one who is easily pleasable, and yet he is also very tough to become aware of or understand. Ganapati, the word actually means, or Ganesha means, Ganas means our senses, including our mind and our intellect. So therefore the one who worships the Ganesha, they will transcend over the distraction or obstacles of the senses, the mind and the intellect to be present to the supreme awareness. And that is the essence of it. Now we see with so much of food in front, it's hard to concentrate because there is the smell that is coming, and that's a distraction to continue the puja. Similarly, whatever happens with our eyes, with our nose, with our ears, you hear something, you are distracted. The most incredible distraction that the human being is now fraught with is called cell phone, especially WhatsApp messages, Facebook, Twitter, Instagram, constantly distracting. You cannot even focus for a split second. I see people coming for bhajans and they will be constantly checking their messages. What happens? Nothing will happen. Some guy is posting good afternoon to you. What is so good about it? Why do I have to every day see a message, good afternoon, good morning, good night? Why do you have to distract everybody with stupid messages? And they don't even belong to them. The guy doesn't even wait. The moment he gets, he will forward. And I ask the people, did you read the message? No, sir, it's only for forwarding. And then how much distraction happens with all of this? The one who has
the grace of this Lord, the mastermind is called Ganesha, we shall be able to focus, and that focus is so important for, especially for students. Therefore, the Siddhivinayaka Vratam is especially performed by students and children because you need all that focus and you need the ability to listen. And to listen you need all these big ears, and that's what he signifies for. So Swami has given beautiful explanations about what Vinayaka stands for. And with all that, now we are going to offer this incredible Naivedyam to Bhagavan. Let us thank all the ladies who worked hard to produce all this food for him, working all very thank you. And this beautiful Ganesha that is made with clay, the Ganesha that is made with vegetables and all these flowers and everything. Thank you, Swami, for bringing us to your presence. And we pray that while you consume this Naivedyam, we stay focused watching you eating. Okay, Jai Sai. Om Sugandhan Sugataschaiva Modakan Ghatapachitan Naivedyam Grihyatan Deva Chanamudgaif Prakalpitan Bhaksham Bhojjan Chalekyan Choshyam Paniyamevacha Idam Grihana Naivedyam Maya Dattam Vinayaka Om Bhuvasvaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रतं त्वा सत्येन परिशिष्यामि अमृतमस्तमितो वस्त्रणमये सिद्धिविनायका ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः भक्ष्यभोज्यलेख्यजोष्यपेयात्मक मोदक आर्य मधुर फल मधुरान लड्डून मोदकान दूध पेड़ान ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा पानीयं समर्पयामि पादौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ॐ सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविध नैवेद्यानि समर्पयामि अथ ताम्बूलं पूगीफलसमायुक्तैर्नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः गुडाहारसहित ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि ॐ अथ नीराजनं just I need the deepam नीराजन deepam okay not that this arati no okay okay कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि ॐ घृतवत्ति सहस्रैश्च कर्पूरशकलैस्तथा नीराजनं मया दत्तं गृहाण वरदो भव ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नीराजनं सन्दर्शयामि कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि ॐ अथ मन्त्रपुष्पं टेक ए फ्लावर ॐ गणाधिप प्लीज से गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्र अघनाशन विनायकेश तनया सर्वसिद्धि प्रदायक एकदन्तैक वदन तथा मूषकवाहन कुमार गुरवे तुभ्यं अर्पयामि सुमांजलिं This is Pushpanjali is offered to Bhagwan. Now Brother Om Sri Siddhivinayaka Swamine Namaha
Pushpanjalim samarpayami. Om Pradakshinam. Now think that you are rotating yourself mentally. Om Pradakshinam karishyami satatam modaka priya madvighram haraye seghram bhaktanam ishtadayaka Akhuvahana devesha vishwavyapim vinayaka Pradakshinam karomi tvam prasida varado bhava Yani kani ja papani janmam tarakatani cha Tani tani pranashyanti pradakshina pade pade Praptoham prapta karmaham praptatma prapta sambhavaha Trahimam krupaya deva sharanagata vatsala Anyatha sharanam nasti tvameva sharanam mama Tasmat karunya bhavena raksha raksha vinayaka Om Shri Siddhi Vinayaka Swami Namaha. See how quickly we forget what we are doing. Om Shri Siddhi Vinayaka Swami Namaha. Atma Pradakshina Namaskaram Manasa Kalpayami Atha Sashtangam. Okay, we'll have Ratish do on behalf of all of us. Om Om Namo Namo Ganeshaya. Om Namo Namo Ganeshaya. Namaste Vishwarupine. Namaste Vishwarupine. Nirvignam Kuru Me Kamam. Nirvignam Kuru Me Kamam. Namami Tvam Gajanana. Namami Tvam Gajanana. Agajanana Padmarkam. Agajanana Padmarkam. Gajanana Maharnisham. Gajanana Maharnisham. Anekadam Tam. Anekadam Tam. Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. Ekadantam Upasmahe. Not Anekadantam Bhaktanam. Ekadantam Upa. That is not correct. You understand? Anekadantam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. All the devotees have many teeth. You have only one teeth. So it is not that. There is beauty of Sanskritam language. You have to pay attention to what it means. Anekadam. Tam bhaktanam. Dam means boon. So you give multiple boons to your bhaktas. O ekadanta. For you, the one with single tusk, I offer my love and pranams. Anekadam tam bhaktanam. Anekadam Tam Bhaktanam. Anekadam tam bhaktanam. Anekadam Tam Bhaktanam. Ekadantam upasmahe. Ekadantam Upasmahe. Namaste bhinnadantaya. Namaste Bhinnadantaya. Namaste harasunave. Namaste Harasunave. Mama bhishtaprado. Mama Bhishaprado. Bhuyo. Bhuyo. Vinayaka namostude. Vinayaka Namostute. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Lot of car clashes together. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Ashtanga Namaskaram Samarpayami. Ashtanga Namaskaram Samarpayami. Now we are going to pray to Bhagavan. Prasida Deva Devesha. Prasida Deva Devesha. Prasida Gananayaka. Prasida Gananayaka. Ipsitam me varandehi. Ipsitam me varandehi. Paratraja parangatim. Paratraja parangatim. Vinayaka varandehi. Vinayaka varandehi. Mahatman modaka priya. Mahatman modaka priya. Avighram kuru me deva. Avighram kuru me deva. Sarvakaryeshu sarvada. Sarvakaryeshu sarvada. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Prarthana Purvaka Namaskaran Samarpayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Chhatramacharayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Chamarair Vijayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Geetam Shravayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Nrutyam Darshayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Vadyam Ghoshayami. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Andolikan Arohayami.
ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. అశ్వానారోహయామి. ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. గజానారోహయామి. ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. Now I am going to do arghyas to Bhagavan. Arghyam grihana heramba varaprada vinayaka gandha pushpakshatair yuktam bhaktya dattam maya prabho. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Idam arghyam. If you have uddharina and water, you can also take a spoon of water and akshatas and offer it to Bhagavan as well in your plate. Om Arghyam Om Namastubhyam Ganeshaya Namaste Vighnanayaka Punararghyam Pradashyami Gruhana Gananayaka. Om Shri Siddhi Vinayaka Swamine Namaha. Idam arghyam. Om Namaste Bhinnadantaya Namaste Harasunave Idam arghyam Pradashyami Gruhana Gananayaka. Om Shri సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. idam argyam. Om Gauryangamala Sambhuta Swami Jyeshtha Vinayaka Ganeshwara Grihanargyam Gajadana Namostute. Om Shri సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. idam argyam. Om yasya smritya cha namokya tapah puja kriyadishu nyunam sampurnatam yati sadyo vande gajananam mantrahinam kriyahinam bhaktihinam vinayaka యత్పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్తు తే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. Now before we go into the thing, we also have the opportunity to now pray to him with different songs, and we will offer, there are 2 bhajans left. Whoever are the 2 students that didn't sing, they can come and sit in the front so that they can offer. Okay, and then after that we will do Ganesh Ashtakam, and then the story will be read by the student. Om Shri Parvati Putra Lokatraya Stotra Sapunya Charitra Bhakte Bhavaktra Mahakaya Kachaya Neenada Sanjata Swami Shiva Siddhi Vigresha Nipada Padmambulan Nidu Kantambu Nibodza Nivomu Nimauli Valendu Kandambu Ninalku Hastambulan Karalambu Ni Pedda Bhaktrambu Dantambu Nipada Hastambulambo Dhanambul Sada Mushakashvambu Ni Mandahasambu Ni Chinnitondambu Ni Gutsurupambu Ni Shurpakarnambu Ni Naga Yajnopa పవితంబు నీ భవ్య రూపంబు దర్శించి హర్షించి సంప్రీతి మొక్కంగ శ్రీగంధమున్ కుంకుమం వక్షతలు జాజులన్ చంపకంబుల్ తగన్ మల్లలున్ మొల్లలున్ మంచి చేమంతులున్ తెల్ల గన్నేరులన్ మంకెనల్ పొన్నలన్ పువ్వులన్ మంచి దుర్పంబులన్ తెచ్చి శాస్త్రోక్త రీతిని సమర్పించి పూజించి సాష్టాంగముం చేసి విఘ్నేశ్వర నీకు టెంకాయ పొన్నంటి పండ్లున్ మరిన్ మంచివౌ నిక్షుకండంబులన్ రేగు పండ్లప్పడంబుల్ వడల్ దేయి బూరల్ మరిన్ గోధుమప్పంబులన్ పునుగులన్ బూరెలన్ గారెలన్ చక్కమౌ చల్మిడిన్ బెల్లమున్ తేనెయున్ జున్ను వాల్యాజ్యమున్ నాను బియ్యంబు నామ్రంబు బిల్వంబు మేల్ బంగారు పళ్ళెంబునందుంచి నైవేద్యమున్ మంచ నీరాజనంబున్ నమస్కారముల్ చేసి విఘ్నేశ్వర నిన్ను పూజింపకే అన్య దైవంబులన్ ప్రార్థనన్ చేయుటల్ కాంచనం వల్లకే ఇన్ముదా గోరు చందంబుగారే మహాదేవ ఓ భక్తమందార ఓ సుందరాకార యో భాగ్య గంభీర యో దేవ చూడామణి లోక రక్షామణి బంధు చింతామణి స్వామి
నిన్నెంత నేనెంత నీదాసదాసానుదాసుండ శ్రీ దొంత రాజాన్వయుండ రామావిధానుండ నన్నిప్పుడే చేపట్టి సుశ్రేయును చేసి శ్రీమంతుగా దూచి హృత్పద్మ సింహాసనారూఢతల్ నిలిపి కాపాడుటే కాదు నిన్గొల్చి ప్రార్థించు భక్తాళికి కొంగు బంగారమై కంటికిన్ రెప్పవై బుద్ధియున్ విద్యయున్ పాడియున్ పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధింతగన్ కల్గగా చేసి పోషించు వంటి కృపన్ కావుమంటిన్ మహాత్మా ఇవే వందనంబుల్ గణేశ నమస్తే 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 నమః శ్రీ శంభుతనయునకు సిద్ధి గణనాథునకు వాసిగల దేవత వంజునకును ఆసరా విద్యలకు ఆది గురువైనట్టి భూసురోత్తమలోక పూజ్యునకును జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం నేరేడు మారేడు నెలవంక మామిడి దుర్వార చల్లంగ ఉత్తరేడు వేరు వేరుగా తెచ్చి లెక్కతో పూజింతు పర్వమున గణపతికి జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం సుచిరముగ భాద్రపద శుద్ధ సవితియందు పుసక సజ్జనులచే పూజ కొల్తూ శశి చూడనాదన్న చేకొంటినొక వ్రతము పర్వమున దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం పానకము వడపప్పు పనస మామిడి పండ్లు దానిమ్మ ఖర్జూర ద్రాక్ష పండ్లు తేనెతో మాగిన తీయ మామిడి పండ్లు మాకు బుద్ధి నెచ్చు గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం ఓ బొత్స గణపయ్య నీ బంటు నేనయ్య ఉండ్రాళ్ళ నీదికి కండు పంపు కమ్మని నెయ్యు కడు ముద్ద పప్పులు బొత్స విరుగడ పిలుచు కొనలు కొనుచు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం పువ్వులను నిలుగొల్తు పుష్పాల నిలుగొల్తు గంధాల నిలుగొల్తు కస్తూరిని ఎప్పుడు నిలుగొల్తు ఏక చిత్తంబున పర్వమున దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం మంగళము మంగళము మార్తాండ తేజునకు మంగళము సర్వజన వందితునకు మంగళము ముల్లోక మహిత సంచారునకు మంగళము దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం అరవిగంధక్షతల్ ధ్రువదీప నైవేద్య తాంబూల పుష్పోపహారములను భాద్రపద శుద్ధ సవితిని పగటి వేల కుడుములు నాంబాలు ఉండ్రాలు పప్పు పాయసము దున్నుతేనను పంపి నీల కోరి పూజి నిర్ణపుడు కోచెరరా జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం బంగారు చెంబుతో గంగోదకము తెచ్చి సంగతిక శివులకు జలక మార్చి మల్లె పువ్వులు తెచ్చి మురహరిని పూజింతు రంగైన నా ప్రాణ లింగమునకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం దేవాది దేవునకు దేవతారాధ్యునకు దేవేంద్ర వంజునకు దేవునకుడు దేవతలు విను కొలిచి తెలిసి పూజింపుడు భౌతుడగు దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం ఓ వత్స గణపతి ఓర్పుతో రక్షించి కాచి మమ్మేనుని కరుణతోను మా పాలగలవని మహిమీద నల్లపుడు కొనియాడు చిందు కొర్కెదీరా జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం Singing. गणनायकं गणेश्वरं गणनायकं गणेश्वरं गणनायकं गणेश्वरं गौरी गौरीतनयं गजाननं गौरीतनयं गजाननं गणनायकं गणेश्वरं
मूषिकवाहन श्रीगणनाथम् मूषिकवाहन श्रीगणनाथम् मूषिकवाहन श्रीगणनाथम् पाशाङ्कुशधर बालगजाननम् पाशाङ्कुशधर बालगजाननम् आनन्द ताण्डव नर्तन गणपतिम् आनन्द ताण्डव नर्तन गणपतिम् विनायकम् साई विनायकम् विघ्ननाशकम् विघ्नेश्वरम् साई गणनायकम् गणेश्वरम् गौरी तनयम् गजाननम् वाहन श्रीगणनाथम् पाशाङ्कुशधर बालगजाननम् आनन्द ताण्डव गणपतिम् गणपतिम् आनन्द ताण्डव नर्तन गणपतिम् साई विनायकम् विघ्ननाशकम् विघ्नेश्वरम् साई विनायकम् विघ्ननाशकम् गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिंधुरवदना जनपालना सिंधुरवदना जनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक
இந்த கேமரா திருப்பி தான் எடுத்து வச்சிடுறேன். குணகண ஆனந்ததாயக குணகண Oh, let's go to the story. Now we're going to go through the story. Some of the children can read the story. Yes, Achintya will start with you. Okay, go ahead. Once there lived a demon king by the name of Gajasura. Gajasura. He was named so because he had the form of an elephant, Gaja. He performed great penance, tapasya, for Lord Shiva. Shiva, who was pleased with the penance, came to him and offered him a boon, Vara. That demon prayed Lord Shiva as soon as he saw him, and then prayed that, "Hey Lord, I would ask you stay in my stomach as boon." Lord Shiva, known for his love toward the followers, agreed and stayed in the stomach of the Gajasura. In the meantime, Goddess Parvati, wife of Lord Shiva, who was in Kailasam, the abode of Lord Shiva, was getting worried, as her husband was not to be seen for many days. She searched and finally found out that Lord Shiva was residing in the stomach of the demon Gajasura. Then she was very worried on how to get her husband back and prayed to her brother, Lord Vishnu. Lord Vishnu came to Parvati, who narrated the whole story of her husband and requested Vishnu to help in getting her husband back. Vishnu consoled Parvati and promised that he would get back her husband. We'll complete this story. Okay, next page you read. Lord Vishnu, along with other deities like Lord Indra, Brahma, etc., hatched a plan of getting Shiva back. As a part of the plan, they decorated Nandi, the bull, as Gangi Reddu. Reddy ka Reddu. Gangi Reddu. Gangi Reddu. This is a part of Andhra tradition wherein bulls are decorated and trained to make movements according to the music. And gods were disguised as musical instrument players, where all the gods took up different musical instruments. With everything ready, all of them went to the capital city of the demon, Gajasura. In the city, they started the show of making the bull move to their music, and it was magnificent and started pulling huge crowds. The fame of the bull play reached Gajasura, and he summoned them to his court. In the court, all the gods made Nandi play beautifully, by which Gajasura was impressed and asked the band to go ahead and ask for anything, and he would for sure give it to them. Listening to that, Vishnu said that Gangi Eddu was none other than Nandi, the vehicle of Shiva, and they were here for Shiva. Listening to that, Gajasura understood that the one who spoke was none other than Lord Vishnu, famous for killing demons and knowing that he had no other way out but to stand on his word. He once again prayed to Lord Shiva and asked for another boon, stating that his death was imminent, and so he prayed to Shiva that he made his head to be prayed in all the lokas, Bhulokam, Patalokam, etc.,
and he said that Shiva should wear his skin as clothes, for which Lord Shiva agreed. Vishnu asked Nandi to pierce the stomach of Gajasura, which Nandi did, and Shiva was out from the stomach of Gajasura. Vishnu then advised Shiva that the boons were to be given on discretion and asked him to consider before giving boons to demons. Then all the gods left, and so did Shiva, mounted Nandi and left to Kailasha. Birth of Ganesha. Okay, one lady. Okay, go ahead. No, Satya. Yeah. Birth of Ganesha. Knowing the arrival of Lord Shiva, Parvati feels relieved and happy. She performs Abhyangana. నేను చెప్తాను ఇంగ్లీష్ అభ్యంగన స్నానం. This is a form of a bath taken by applying oil to the whole body, massage until the whole oil gets into the body, and then apply Sunipindi, yes. flour called Yalagu to the body and rub it so that when the flour peels, it takes off all the dust. While performing the bath, she prepares a boy with the flour and instills life into it. The child is born, and she asks him to be guard at the front door as long as she is bathing, and tells him to not let anyone enter the house. The child is now standing as guard to the door of the house of Parvati. Shiva comes home and tries to get into the home, where the child stops him. Shiva gets angry and in fit of rage kills the boy by beheading him and burying the head. Burying. It's okay. He beheaded him and Enters the house. yeah, thank you. Parvati, who is ready by now, receives Lord Shiva with affection. In the course of talking, the discussion comes up on the boy who was guarding the door. Shiva tells Parvati that he had killed him, upon which Parvati narrates the whole story of the birth of the boy and becomes sad. Shiva repents on what he had done, and the only way that he can bring the boy back to life is by attaching a new head. He sends all the soldiers under his command to go fetch a head of a person who is lying or sleeping with his head positioned in the north direction. Then all the soldiers go in all directions and finally return with the head of Gajasura, stating that Gajasura was the only one sleeping with his head kept in the north direction. Hence, it is advised to not sleep keeping your head in the north direction. One more reason being that the south is the position of Yama, and no one would want to see Yama as soon as they get up. No, finish. Shiva then brings back the boy to life by attaching the head of Gajasura and named him Gajanana or Ganesha. He was given a rat by the name of Anindyudu as a vehicle. Shiva and Parvati, after a few years, had another son by the name Kumaraswamy. Kumaraswamy became the commander of the army of gods later. Kumaraswamy is also called as Kartikeya, Subramanya, and etc. Okay. Good to see you. Go ahead. Next. Here. Next. Read the No, he changed it. Wrong page. Commander of Vignas. Vigna means some obstacle that would come for any work we would want to do before the work itself gets started. That is, you will get a lot of troubles before you start the work and finally you will not be able to complete the work. Vignas will never allow you to finish the work as expected by you. Once all the gods, sages, meet Shiva and pray to him and ask him to appoint someone as a head of the Vignas. Kumaraswamy comes forward and asks his father to give the head of Vignas post to him as Gajanana is short and fat. But Gajanana, Ganesha, also wants the post, so Shiva puts them to a test. The test is to go around all worlds and to bathe in the holy rivers present in the worlds in return. Whoever comes first will be appointed as the head of Vignas. Listening to Kumaraswamy, Listen to which Kumaraswamy sits on his vehicle, Peacock, and flies
for competing with us. Hey, wonderful. Ganesh, on the other hand, feels sorrow approaches him, his father, and praise him, saying, "You know that I am fat, short, and cannot move as fast as Kumaraswamy. So I request you to advise me on how to win this competition." Lord Shiva responds to his prayer and says that if you recite the Narayana Mantram and do Pradakshina, parents, circling around the parents, it is equal to bathing in all the holy rivers. Shiva teaches Ganesha Narayana Mantra, and Ganesha, reciting the mantra, does Pradakshina to his parents. Because of the effect of the mantra and Pradakshina, Kumaraswamy also sees his brother, always sees his brother Ganesh to finish the bath and leaves as he tries to enter for a bath in any of the holy rivers. Kumaraswamy returns to Kailasham and tells his father to forgive him of his ignorance in recognizing his elder brother's capability and requests him to place Ganesha as the head of Vignas. So Ganesha is named as the head of Vignas and hence called Vigneshwara, Lord of the Vignas. This ceremony of placing Ganesha as the head of the Vignas was done on Bhadrapada Shuddha Chaviti. Bhadrapada Shuddha Chavati, and from that day on it is celebrated as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Chaturthi or Vinayaka Chavati. All the people, gods, sages, etc. of the worlds will be presented Ganesha with a lot of different foods / items he liked, like bananas, coconuts, sweets, laddu, Kudumulu. gudumulu, etc. And Ganesh ate most of them. He, wishing to seek the blessings of his mother and father, goes to them with his big stomach. He tries to take their blessing by doing Sashtanga Namaskaram. Sashtanga Namaskaram is where the person lies down on the floor with his hands stretched over the forehead and keeps his face, stomach, and legs, and they all touch the ground. But because of his stomach, if he tries to keep his hands on the ground, his legs would raise, and if he places his legs on the ground, his head would raise. Looking at the way Ganesha was doing Namaskaram, the moon resides on the head of Lord Shiva, laughs, and Just like all of us. laughs, and Ganesha is subjected to Dishti, also known as Nazar in Hindi. Yes. You can say as to look at one cause harm to him, feel jealous and would like that some harm would happen to him, which causes the stomach of Ganesha to break open and Ganesha dies. Looking at his dead son, Parvati gets angry and puts a curse on the moon that as her son died because of the Dishti by moon, the one who would from now on see the moon, will be falsely alleged / blamed Neela Paninda, that's okay. causing pain to them. Yes. The one who would look moon will be held responsible for the bad deed or crime that they have not committed. Yes. At the same time, the famous 7 sages were doing pradakshina, circling around the fire with their wives. The fire god Agni Deva gets attracted to the wives of the sages and would want to spend time with them. But afraid of the curse that the sages would give, if he tries to do it, he refrains himself. Knowing this, Swaha Devi, the wife of Lord Agni, tries to bring happiness to her husband. She transforms herself to look like the wives of the 6 sages and spends time around with her husband. Swaha Devi transformed to look like the wives of the 6 sages except for Arundhati, the famous Sati. The 7 sages by chance see this and think that it is their wives are present with Lord Agni and leave their wives. This was the result of the wives seeing the moon after the curse of Parvati. The wives of the 7 sages go to Brahma and pray to him for their innocence. Shiva, who knows everything, calls for the 7 sages and pacifies them by narrating the truth that it was in fact the wife of Agni who transformed herself to look like the wives of the 7 sages. Then Brahma, along with the other gods, go to Kailasham and gives life to the dead Ganesha and prays Parvati to withdraw her curse. Parvati, relieved of the pain, is happy to see her son, so she reduces the intensity of the curse by stating that
The curse will prevail only on the day the sun was dead of the moon's dishti, on the fourth day of the Bhadrapada month. Bhadrapada Masam, Bhadrapada Shuddha Chaviti. So people from that day onward refrained themselves from looking at the moon on the day of Vinayaka Chaturthi. Jenny. Okay, she's here. She's here. This went on for some time. In Dwapar Yuga, there are 4 yugas. One day, sage Narad came to see Lord Krishna in the city of Dwaraka. He informed him of the curse of Parvati, narrated the whole story, and advised him not to see the moon today, as it was Vinayaka Chaturthi. Krishna made this matter to be known to all the people of his kingdom, and he was also careful not to look at the moon. Krishna loves to drink milk, and so goes to the cow and milks the cow. And when he's about to drink the milk, he sees the reflection of the moon in it. He immediately remembers what Narada has said and prepares himself to face the false allegation he might be dragged into. Some time passes by, and once a person by the name Satyajit visits Sri Krishna and shows him a diamond by the name of Samantakamani, which is given to Satyajit by Lord's son. The specialty of the diamond being it gives out 8 kilos of gold. kilos of gold every day. Then Krishna asks Satyajit to give the king for the best use for the welfare of the people, but Satyajit refuses and Krishna lets it go. Once Prashena, the brother of Satyajit, goes hunting wearing the diamond. Looking at the diamond and presuming it to be meat, a lion attacks and kills Prashena and takes the diamond. A bear has a look at the diamond with the lion and fights with it and takes the diamond to his home, which is a cave, and ties it to the cradle in which his daughter is sleeping for her to play. The next day, as Prashena doesn't return, Satyajit blames that Krishna has killed his brother and taken the diamond, as he refused to give it to Krishna. Listening to which, Krishna understands that this blame was due to looking at the reflection of the moon in milk during Vinayaka Chaturthi. In order to free himself from the blame, Krishna inquires on what happened and goes to the forest looking for Prasena. In the forest, at one place, he finds the dead body of Prasena and footmarks of a lion. He follows the footmarks of the lion and after some time comes to a place where he sees that there's been a fight between a lion and a bear. He then follows the footsteps of the bear and reaches the cave of the bear. Krishna enters the cave and sees the diamond tied to the cradle. He tries to take it back and the girl starts crying, hearing which the bear comes and attacks Krishna. Krishna fights back with the bear. The fight goes on for 28 days and the bear loses all its energy and realizes that Krishna is none other than Ram. The bear is none other than Jambavanta, the king of bears and aide of Rama in Treta Yuga. He then remembers how after the war with Ravana, Rama granted a boon to Jambavanta, and Jambavanti foolishly asks for a deal with Ram, which Ram grants and says that his boon would be fulfilled later, and it is now that Krishna has come to fulfill the boon, and both Rama and Krishna are the avatar forms of Lord Vishnu. He then prays to Krishna, who relieves Jambavant of all the pains. Jambavant, along with the diamond, also gives him his daughter Jambavanti and requests him to accept her as his wife. Krishna agrees and returns to Dwaraka along with the diamond and the girl. He summons Satyajit, returns the diamond, and narrates the whole story. Listening to which, Satyajit repents and offers Krishna not only the diamond but also his daughter Satyabhama. Krishna rejects the diamond and accepts Satyabhama as his wife. All the people sages then pray to Krishna and tell him that because you are the Almighty, you are able to prove your innocence. But what about normal people like us? Please show us some means to overcome the blame if we look at the moon on Vinayaka Chaturthi. Krishna, pleased by the prayers, gives the boon that all those who perform the Ganesh Puja
and would listen to the story of birth of Ganesha and the story of Samantakamani and put the akshata, rice which is prepared by mixing it with turmeric and are used to do puja, on their heads would be freed from the curse if they accidentally see the moon. So please chant this sloka along with me, and then take a few akshatas in your hand and chant this sloka with me. Simha prasenamavadhit, Simha prasenamavadit, Simho jambavata hataha, Simho jambavata hataha, Sukumarakamarodihi, Sukumarakamarodihi, Tapahyesha Shamantakaha, Tapasyesha Samantakaha, Tapahyesha Shamantakaha, Tapasyesha Samantakaha, Tapaha Tapaha, Esha Shamantakaha, Samantakaha, Tapahyesha Shamantakaha, Tapahyesha Samantakaha, Swastif Prajabhyah परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति. Please put them on your head, and then please don't purposefully see the moon. Okay? Only accidentally you should not see. If you accidentally see, then this story, listening to the story will protect you. Okay? Understand? So may the Lord Ganesha bless us all, protect us all, give us the awareness and illumine our mind and our intellect. With that, we will conclude with Ganashtakam, followed by Aarti to Bhagwan, the Dhoop Aarti. Okay? Chandar is very happy because 15 minutes time is left. Jai Sri Ram. Okay, so that I can move this thing so that people can come and do the Aarti, please. Okay. Babu? If you know the Ganashtakam, please sing. If you don't know, please listen. Previously. एकदन्तं महाकायं सप्तकाञ्चनसन्निभम् एकदन्तं महाकायं सप्तकाञ्चनसन्निभम् लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् कृष्णाधिनगरम् रागयज्ञोहिदिनम् मौजि कृष्णाधिनगरम् रागयज्ञोहिदिनम् बालेन्दुविलसन्मौलि वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् अम्बिका हृदयानन्दं मातृभिः परिपालितम् अम्बिका हृदयानन्दं मातृभिः परिपालितम् भक्तप्रियं मधोभक्तं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं
गणनायकम् चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालविभूषितम् चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालविभूषितम् चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् मूषिकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे मूषिकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् यक्षकिन्नरगन्धर्व सिद्धविद्याधरैः सदा यक्षकिन्नरगन्धर्व सिद्धविद्याधरैः सदा स्तूयमानं महात्मानं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् गणाष्टकमिदं पुण्यं भक्त्याय पठेन् नरः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो शिवलोकं स गच्छति ॐ पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि वज्रनख
शङ्खाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युदिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे साईदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् प्रेमात्मनाय विद्महे सुहिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्यः प्रचोदयात् साई रामाय विद्महे आत्मारामाय धीमहि तन्नो भावः प्रचोदयात् पादारविन्दयोः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्चिते नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि It's a lot to repeat, but anyway. Okay, Sairam, there are brown bags. So once you're done with the puja, take your plate and you can put the naivedyam, the akshatas, everything in the brown bag and take it with you. Please ensure that you are not spilling the akshatas. Yeah? No, one second. Tendra? Oh, announcement. Announcements, okay. Yes. Please give Vijay the mic. No, that's okay. Okay. Sairam, everyone. We have just one announcement today, which is we are having the American River cleanup as a service project next Saturday, September 23rd. We will have a sign-up sheet for that going on in the bulletin. I think it's the first time we're doing this. No, like we did last year. I did 5 bags. So that's the main announcement. Also, I think we're looking still for sign-ups for the Goshala project going forward as well. So please keep a lookout for that in the bulletin as well. Okay, sign. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Sanghashaka Bhakta Jana Sanghashaka Pati Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Sashimagana Shritara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashita Kalpa Latina
कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमुमर्यन्तयो नीवे स्वामी मर्यन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप जय शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंतको मंगल हारति अंतको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्यदाता दीवा शरणागततारि ज्ञानासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा स्वानुनियानंद सस्वरूपिका वेदंगा मोक्ष जनदारि निज गुणा श्रीरंगा गुणा श्रीरंगा आरती साई बाबा जय मणि जय बाबा जय कैसा बाबा आदि श्री तुझे मामा तुझे मामा आरती साई बाबा आरती साई बाबा कलियुगी अवतारा परब्रह्म सचरा अवतीर्ण छाया से स्वामी दत्तादिगंबर दत्तादिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवस गुरुवारी बंद करी दिवारी मन पावाय मम भयाली वारी भयाली वारी आरती साई बाबा माता जगदेवा नम चरण सेवा
देवादि देवा भारते साई बाबा माधवे माधवाया संभाळा पूरी भाका आपुरी भाका भारते साई बाबा सौख्यदाता देवा राम वर साई बाबा राम वर भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक बाबा शिवंदन साई शिवंदन करू बाबा शिवंदन बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई भाव माझे आई आई त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अनंता तुला देव सेवे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या शिवे शेषगाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मणिभक्तदाहित्य भावे पुरावे तरे भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगतारुणी मायताथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा मसे जो सर्वदा मया संत लीला इसे आज्ञलोकात् परिजो जनाला परिअंतरि ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा जन्म मानवाचा नरासार्थका साधनी भूत साचा नरू साई प्रेमानया नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे कवीसान अल्पज्ञबाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखे घाल प्रेमे कराग्रास हाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादेक जंजा पदावंदिताते सुखादेक जंते समान त्वदेते दयाकाले तीर्थे पदिनं ग्रहोगा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझा जा पदा पारता गोपपाली सदा रंगलेचे स्वरूपे विराले
ऐसा ये साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वव्यापक तू सुविसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा हे ईवा काशी स्नान जपा प्रतिवसी कोल्हापुर भिक्षे श्री निर्मल नदी तुंगा जलप्रासी निद्रामाहुरदेशी ऐसा ये ईवा थोड़ी लोकल से वाम करे त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुरकारी देशिल मुक्ति चारी ऐसा ये ईवा पाई पादुका जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण करि जेवा नाग जटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये ईवा अक्षय तुझाया हे जानी अक्षय